The BJP losing the Faizabad constituency, which houses the much fabled Ram Mandir, has come as a shock to many. I visited the temple town a few days ago to figure out exactly what had happened. And the first thing that was immediately clear to me was the portrait of a town as before and after. I visited the temple town 2 weeks before the Ram Mandir consecration, and I could get a sense that this was a place which looked like an adolescent preparing for a fancy dress competition. Behind the barricades on the Ram Janmabhoomi Path, all the shops were in a straight line of file. I mean, very obedient, eager to almost impress the visitors. This time, though, I saw that a lot of shops had spilled on the street, selling different kinds of items, right from puja to golgappas to whatnot. It almost gave me a sense that this is a town that is screaming that this is how we are reclaiming a street and town, especially because so many shopkeepers on the main road had their homes and shops snatched, almost shrunk to half on the government orders, and they were given very meager compensation. सब ऐसे तोड़ तार के गिरा दिए हैं, नाला सड़क कहाँ पे है, घर पूरा इधर गिरा रहे हैं तोड़ तोड़ कर। तो हम 2 कमरा में गुजारा बच्चों को लेके कैसे कर सकते हैं? अब 6 कमरा इधर चले गए सब लोग। तो रोजगार यहाँ छीना गया, रोजगार दिया नहीं गया। इन्होंने सबकी दुकानें तोड़ दी। कहने वाले आप जाकर के एसपी से पूछ सकते हैं, डीएम से पूछ सकते हैं, मतलब विकास प्राधिकरण से आप पूछ सकते हैं। इन्होंने सबकी दुकानें तोड़ी तो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया और 50,000 रुपया जुर्माना, मतलब इन्होंने मुआवजा लगाया। इन्होंने जो अपनी दुकान बनवा करके खड़ा किया वो 25 लाख से लेके 50 लाख तक इनका गया। और भी मतलब जो हाल ही में गुप्तार घाट पे नीलामी लगी तो 85 लाख तक गया एक दुकान की कीमत। आप बताइए, जिस गरीब के पास जो ठेला लगाता है या गुमटी रखे हुए, वो 85 लाख या 25 लाख रुपया कहाँ से लेकर आएगा? तो ऐसी समस्या आने पर हमारा तुरंत तो 1 लाख, अपना बेचे तो 1.25 लाख। तो इतनी समस्या तब बनी रहेगी तो जनता तो कहीं ना कहीं क्रोध में तो रहेगी। The ex-BJP MP Lallu Singh was very arrogant. In fact, they used 2 words to describe him: Ahankari and Ghamandi. They said that he never campaigned for election, he never came to ask for votes, he dismissed the shopkeepers who spoke about compensations and everything else. Then the locals also spoke about the fact that the BJP had milked the Ram Mandir for political gains. They were in fact more willing to hear what their Shankaracharyas had said, that this was something that was against Hinduism. Other thing that the locals said was that there were numerous barricades that had overwhelmed the town. They said that it feels like as if we are captive in our own homes. This sense of siege where they couldn't move freely in their own town. लेकिन हर जगह हर चौराहे पर आप बैरिकेटिंग लगाए रहोगे तो एक बाजी 2 मिनट के लिए पूछेगा कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? The fact that, as one priest told me, that 30 to 35 people had died while going to the hospital during the time of medical emergencies had also not sit well with them. यहाँ तक कि जहाँ तक हम जानते हैं वहाँ तो 30-35 लोग मर चुके हैं बिना इलाज के। पहुँचने में देरी हो गई, जाने का रास्ता नहीं है जल्दी। And finally, the fact that Lallu Singh spoke about the BJP amending the constitution if it got more than 2/3 of majority had also not sat well with them. They interpreted it also as an attack on their beloved Baba Saheb Ambedkar. देखिए, हम ज़्यादा संविधान पे नहीं कहेंगे कि ज़्यादा संविधान की वजह से इनका पलटा है, क्योंकि संविधान बहुत पहले से ही मतलब खतरे में है, जब से बीजेपी की सरकार आई तब से ही। And finally, the fact that the government has been snatching away a lot of lands of local villagers is something that has worried a lot of them to build a ring road. Of course, there was this whole thing about the AeroCity construction, which has also worried a lot of villagers. But this new project has absolutely devastated them. तकलीफ भी बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे मेन रोड पे है रसूलाबाद रोड, जहाँ पे आप खड़े हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे नोटिस आई थी हमारी ग्राम सभा को, जिसका रिंग रोड में गया है, वो लोग सीधा डायरेक्ट यही बोले कि अयोध्या बाईपास में आप लोगों की जो कि रिंग रोड के नाम से है वो ज़मीनें जा रही हैं, आप लोग मतलब आइए वहाँ पे नोटिस लीजिए और नाम करिए उसी प्रोजेक्ट में। तो हम लोग मतलब कि जब आई यहाँ पे नोटिस तो सीधा देखे उस पर सिर्फ इतना ही लिखा था, ना हमारे नोटिस पे ज़मीन का सर्किट रेट लिखा था, ना पेड़ का रेट लिखा था। इतना मोटा मोटा पेड़ है, पता चला 600-700 रुपये। देखिए इधर कुआं का रेट, मंदिर का रेट, बोरिंग का रेट किसी का नोटिस पे दर्शाई ही नहीं थी। To end, I would like to end with a quote that a young man told me in this village of Samakhurd in Ayodhya. He said that, sir, Hindu खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है, जमीन खतरे में है, which is to mean that
Hindus are not endangered. The constitution is not endangered. Our lands are endangered.